डॉक्टर सीमा दास हमारे ईसी मेंबर, डॉक्टर राजपाल पंवार जी होंगे, और 2 हमारे एसी मेंबर डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी और सीएम नेगी साहब हमारे साथ रहेंगे, जो ब्रीफली इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आई फर्स्ट वेलकम आवर ऑनरेबल चेयरमैन, एडी चेयरमैन डॉक्टर आदित्य मिश्रा जी, जिनका विजन और जिनका एक्टिव और ऑनेस्ट एक्टिविज्म हम सबको एक लीडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन हो, चाहे इसके एकेडमिक एजुकेटिव काउंसिल्स हों, या पूरे देश भर में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ, उन सब में हम इनसे प्रेरणा लेते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले भैया का स्वागत करता हूं, आपको ये माइक हैंड ओवर करता हूं प्रेसाइड करने के लिए। आप एक बार ब्रीफली बोल दें, फिर हम सब आगे बढ़ते हैं। आदित्य भैया। Thank you, Ashok. I'm quite grateful for your kind words, but today's meeting is basically briefing about the Executive Council and Academic Council proceedings, and what were the agenda and how our people reacted to those agenda. And we all know the grand design of the NEP is to privatize and commercialize higher education, to ensure that all posts become contractual, tenure track appointments, guest faculty will be the order of the day. So we have been talking about these things, and from the grant mode, the university and colleges are shifting towards a mode that is loan based. And this is quite evident. When HEPA came, we talked about it. We went to the teachers in telling that this is the grand design of converting the universities and colleges from the grant-based system to a loan-based system. I will request, without any loss of time, to you choose the order. Call Dr. Seema Das ji, Rajpal Singh Pawar ji, and CM Negi Sahab and Alok Panday will talk about all these issues. So kindly proceed ahead. Thank you, Aditya bhaiya. Definitely, the HEFA provides or shifting the grant-based education system to loan-based education system. First, I would like to call Dr. Seema Das, our most active EC members in Delhi University. Kindly, mic hand over to you, Didi. Kindly talk on the development in Executive Council meeting held yesterday. Seema Didi. Didi, unmute yourself. Didi, unmute. Seema Das ji, please unmute yourself. Thank you, first of all, Ashok. Thank you for organizing this very timely kind of a seminar or webinar. So, or a kind of a talk, so that we can also get connected with the teachers of Delhi University and apprise them of what had happened in the EC. I think that they are also very curious to know about the various developments which had happened in EC yesterday. It's very timely intervention, so I'll brief you about various things on what happened there. But then, since the topic is on NEP and NEP, the package of NEP, the components of NEP are being introduced in the
curriculum and system of Delhi University step by step in a packaged way, in a packaged mode. So we have recently, in fact, seen UGCF being introduced in our university system, and immediately after, because EC meetings are being held at a very regular interval these days. So very soon we have seen, yesterday we saw that HEFA proposal was there. So these are the two recent components of NEP which are introduced in Delhi University system, which our respectable chairperson, Dr. Aditya Misra, has always been forewarning about all these things and these dangerous moves which could take. And now we are witnessing them being a kind of a reality. So I'll come to these points which were discussed and which have passed also despite our dissents, and which relates to NEP. But before that, but first of all, I would like to apprise all the teachers of Delhi University who are listening to this talk that what had happened, because yesterday about the ad hoc teachers, the issues concerning ad hoc teachers, because basically the purpose of our meeting was to raise their concern and also bat for the mechanism for their regularization, that is the bat for absorption of all ad hoc and temporary teachers. And that also in the context of dharna, the cluster dharna which was being held yesterday. So as far as that the issues of absorption was concerned, and the 0 hour started, and the first thing which we raised, and very emphatically we raised, was that of absorption for all the teachers of Delhi University who are working on ad hoc and temporary capacity. Why? Because all the arguments which we always put before the House, that why it's necessary, all these arguments were being put before the House. And then we demanded kind of a formation of this committee for absorption. We discussed that in great length. I talked about it great length, and also in fact said to in the EC that I was representing voice of thousands of teachers, and they should and they're concerned about this, and the only solution, which is also in fact been put by our trade union body, that is DUTA, that now we are working on, that how absorption can be realized and what role this Delhi University can play in this direction. And so we asked them to form a committee which would look into it and will also in fact examine all the ways through which this absorption could be a reality in Delhi University. I think that is also my moral responsibility to tell the people of the teachers of this university that there was no assurance from the administration side on formation of this committee, but we have argued, and we are going to in fact continue with our struggle for absorption in a statutory body, but nothing concrete has come out of it. So we also in fact raised the other issues of concerning ad hoc teachers, like adoption of 5th December letter, and then Teachers Welfare Fund, and most importantly, the problem which the female ad hoc teachers are facing in availing the maternity leave benefits, despite the fact that this act has been adopted in EC, has been notified, but still the colleges, the principal, the administration in colleges are not giving them their legitimate right, and they're denying them. So
that was also a major issue which was raised in EC, and EC had taken kind of a note of it. So, and then another issue which which is a major, in fact, problem with this our ad hoc colleagues is about the guestification of their posts. So that was also raised, that how the ad hoc posts are being being decreased, and they are replaced by guest teachers, especially in department and also in colleges. So the number of guest teachers are increasing, and the ad hoc teachers and in those posts where the ad hoc appointments can be made, guest teachers are being appointed, and that is a kind of a violation of the also rules and regulations. So after that, we also in fact raised about the issue of, we also raised the issue of promotion, especially the politics which are being played in this the whole process of promotion. Politics in the form of kind of a politics between the principal and the governing body and the teachers, common teachers. They get harmed, or they get affected in bad way, and they are not in fact getting their due promotion, and the whole files are not moving, and there are so many in fact hiccups in between, and that is because of the politics between the college administration and the governing body members, and the victims are the teachers. These are the very important hurdles. We also in fact raised the issue of this posthumous issue of giving promotion to those professors or associate professors who had died during Corona, but their file had moved to the, and just their interviews were due, but their files were in proper place. And then they passed away. So a kind of a one-time exception for posthumous kind of a promotion, we raised that issue. Then the salary issue of governing body, the Delhi government colleges and the areas and the short of funding, EWS expansion, giving of research grants and all. One achievement which was in fact instantly been provided to us after raising the issue was the formation of committee on giving of earned leave for the vacation period, which was not in fact happening Delhi University, and teachers are continuously working without any break, and there was no provision for any earned leave for that. So the committee has been formed, and in a way that it is going to become a reality that we are going to get earned leave after the committee decides, and we are very hopeful that committee is going to decide in a positive way. So earned leave for the vacation is coming up. That is one achievement, I can say, one meager achievement, but still an achievement of whatever we could in fact extract from the administration in EC. Apart from that, there were many, in fact, issues which we have been raising in Executive Council. For example, College of Arts, the admission for academic session 21 and 22. Then sanction for 25% of EVS seats for teaching and non-teaching staff, research grants for college teachers, then specific issues in certain colleges like Shraddhanand College, like B.R. Ambedkar College, and Shamla, even Shamlal College. And the issues range from promotion to a number of other things also. That was also raised in the EC. Then the most important thing which was not part of the agenda, but we raised was the issue of UGCF and the problem which departments are facing in framing the syllabus under this new scheme of UGCF, where we have to just have, we get 4 credits for the honors paper, the main honors paper, and the departments, they are really finding it very difficult to frame syllabus
taking in account for credits, and especially it is also affecting badly the science department and science curriculum. So it has really reduced and diluted the academic standard of these courses, the flagship honors courses. And it was, in fact, we have been continuously working on that. We have been raising this issue, and this is one of the outcome of implementation of NEP in Delhi University, that we are now with a course which has really led to dilution of academic contents and academic standard of these undergraduate course, which for which Delhi University is known worldwide, at least in India. Then the component of NEP which had come before the House was HIFA. And as Dr. Aditya and Misra has already said, that what are the bad aspects of HIFA? It is just its conversion of the whole university system, the financial model of university system, from grant-based to a loan-based model. And so it's going to lead to a privatization of this public-funded university, and also a hike in the fees of students. And basically, in fact, it will lead us to a situation where we'll find that we are, in fact, gripped in a kind of a debt trap, and it would be very difficult in future to come out of that. And since government is always claiming that it is increasing its budget allocation on higher education, 6.6% raise was also in fact is being claimed. So so we just asked that why we are not going to get these grants for our college and for our universities, and why we should go for DFA and get a loan for it. And also UDF, University Development Fund, has a lot of money and all, and the last EC, there was a kind of the allocation of these the funds from these UDF to various things which university wants to take up as far as infrastructure is concerned, or capital assets creation are concerned, or whatever. So, so our argument was that why we could not, in fact, or why we shouldn't ask for more money from the government, who is claiming that they are raising their financial allocation in higher education. And why we, instead of that, why we are in fact going ahead with this loan-based model of financing. So we opposed it. 3 members in the EC had also recorded that I sent myself, Rajpal Singh Panwar sir, and Advocate Ashok Agarwalji. All 3 of us in fact recorded our dissent on HIFA. The agenda item, as far as the agenda item are concerned, that is this HIFA was one thing which was a great concern to us, because NEP ka part tha. And then other was there was a lot of, in fact, restructuring of School of Correspondence, and especially making School of Correspondence and converting it into College of Correspondence. And there were so many issues, in fact, which was attached with this, and we got clarification on that. So what would be the future of SOL, and what would happen to the teachers who are teaching there in SOL once this College of Correspondence or College of that is established, and especially, in fact, is the Open Learning Institute or college is going to start, and the infrastructure has been put in place, and it is, but it is in a transition phase. So we just objected to that. There shouldn't be a parallel structure continuing side by side. So, but then we got the assurance that it is just a transitional phase. So ultimately, this School of Correspondence, and that is School of Open Learning, is going to be converted into, transferred into, integrated into this College of Learning.
but it will take some time, and they were not sure about how much. Another thing which was another outcome of this meeting was that one thing which was decided was going with the UGC regulation on the on deciding about the seniority. Especially this becomes very important in the selection of professor as for the post of head of department, and recently there was a lot of controversy about it. So it was decided that the UGC regulation would be adopted in letter and spirit. So the professors who are are senior from the date of their eligibility, they would be given chance for such posts. So they would be considered senior to those who are joining as professors. So from the seniority would be decided from the date of eligibility of the concerned professor. Then, so these were the basic agenda item. These are the basic issues which were in fact decided, which were discussed, and few decisions were also taken in Executive Council yesterday. There are many other, in fact, there are whole three bunches of agenda items. So it's just not possible for me to give account of all the items. But if you have any specific query on certain things, then I'm here, I could just answer those things. Also, I wanted to say that apart from the issues which I have just told you now, there were other issues also which we had raised, but since I'm not able to in fact remember those, and I'm not speaking about those things, but there are many more concerning most of the issues which are concerning the teachers and even the non-teaching staffs we had raised there. So this is what I had to say. Thank you for giving me a chance. Over to you. Thank you, Seema Das ji. Your honest activism towards teachers community is really appreciable. Whatever the issue you have taken in the agenda item or in the 0 hours are really very, very crucial and sensitive matters, whether it is one-time regulation for absorption of ad hoc and temporary teachers, or the restoration of workload or number of credits for discipline-specific honors courses, or the issue of implementation of maternity leave for female colleagues in the colleges. That is really a very sensitive matter. The issue you have raised, teachers welfare fund for ad hoc colleagues, fund crisis in 12 government Delhi colleges, HEFA, and promotion politics in the colleges. You very well raised the issue, and we, not only we, all the teachers shares your issue raised by you in the Executive Council meeting. Thank you so much for your brief information about the development in the EC meeting. Now I would like to invite Shri Rajpal Panwar ji, our other EC members, to talk about the development in EC. Rajpal Panwar sir. अभी आलोक जी हैं क्या सर? अरे ज्वाइन करा दीजिए उनको। देख रहा हूँ भाई साहब, ज्वाइन करा दीजिए। राजपाल सर लग रहा है नहीं है सर। नहीं है अशोक भाई, राजपाल सर आ गया अभी आ गए। Shri Rajpal Panwar sir, thank you for connecting with us. Our other EC member, another EC member in Delhi University. Please briefly tell about the development in Executive Council meeting. Rajpal sir.
I think, sir. Can you hear? Yes, sir. You are audible. तो नमस्कार सब लोगों को। सीमा जी ने बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है सारा डिटेल में, आपको ब्रीफ में बता रहे हैं अशोक जी। और द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस मीटिंग वाज आफ्टर द मीटिंग द वाइस चांसलर congratulated Seema madam for her homework that she always does and for the consistency and the power that she has got to stay for such a long time in the meeting and consistently जो था raising her issues and there was a clapping in the house for her. I think this was a great achievement for her and for us all also. बाकी जो इश्यूज की बात है मैं उसमें ज्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी जो है सारे इश्यूज जो है सीमा जी ने टेकअप कर दिए हैं। हेफा से रिलेटेड हम लोगों ने रेज किया तो हम लोगों ने इसी ढंग से कहा कि जब एक मंदिर की तरह हम विश्वविद्यालय को लेते हैं, एक शिक्षा संस्थान जो है हमारा शिक्षा का मंदिर है, तो किसी मंदिर के ऊपर लोन कैसे हो सकता है। सारी बातें हमने अपनी रखी बट देवर एडामेंट। हमने एक जो इशू उनसे कहा कि भी करीबन 1000 करोड़ रुपए आप बोल रहे हैं कि एक नया सेंटर बना है IE करके जो आपका है, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए आपको दिए गए हैं। तो उसका जवाब वाइस चांसलर ने कहा पैसा तो आया नहीं है, सिर्फ अनाउंस ही हुआ है, उसके लिए भी अभी कोई पैसा नहीं आया। तो हमने कहा जब उसके लिए 1000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के लिए, तो हमारे को 1000 करोड़ रुपए क्यों नहीं मिल सकता, हमें क्यों लोन लेना पड़ रहा है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि कोई पैसा आया नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट। तो सीमा जी ने काफी जो है अच्छे ढंग से सारे इश्यूज रेज किए और ऑफ कोर्स आई वाज ऑलवेज देयर विद हर। कुछ जो इश्यूज उसमें थे जैसे उन्होंने बताया कि भी जो हमने यहाँ तक कहा कि जो अगले महीने से जो है जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं दिल्ली गवर्नमेंट वाले, उनमें सैलरी की दिक्कत आ सकती है। हम आपको पहले से ही वार्न कर रहे हैं। इस महीने की सैलरी जो है ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर है, अगले महीने से सैलरी की फिर से दिक्कत आएगी जैसे पहले आती रही है। ये भी हमने आगाह किया, जैसे कॉलेज के इशू थे हमने सदानंद कॉलेज का इशू रेज किया, कुछ और कॉलेज का किया कि गवर्निंग की बॉडी के मेंबर को अलाउ नहीं किया गया उसमें अटेंड करने के लिए विदाउट एनी रीजन। तो आगे से वाइस चांसलर साहब ने अश्योर किया है कि जो भी इसी का यहाँ से गवर्निंग बॉडी होकर के जाएगी, अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन होना है तो इसी ही एक्शन करेगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा उसके ऊपर, आपकी नॉलेज के बगैर नहीं होगा, इतना उन्होंने एश्योरेंस हमारे को दिया है। नहीं कुछ और इशूज थे जो कि हमने रेफर कराने में कामयाब रहे उनको। किसी एक बगैर नाम लिए मैं कहूँ, किसी एक आदमी को जो है प्रोफेसर एमरेटस का जो स्टेटस दिया जा रहा था, जिसका कि हम लोगों ने विरोध किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको मान भी लिया और उसके लिए कमेटी बना दी गई है कि मेरिट के बेस के ऊपर क्या ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि किसको दिया जाए और किसको ना दिया जाए। तो फिलहाल उसको डेफर कर दिया गया है। दिस वाज अनदर अचीवमेंट जो सीमा जी अभी नहीं बता पाई थी, इतना सारा लंबा उनके पास एजेंडा था। बट मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट थी इस बार की, लास्ट में आकर के जो वाइस चांसलर ने हमें रिकॉग्नाइज किया और खासकर सीमा जी के थ्रू उन्होंने सबसे तालियां बजवाई कि भी इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती कि इतनी कंसिस्टेंसी के साथ में ये अपने इश्यूज को रेज करती हैं और कितना होमवर्क करके लेके आती हैं। तो मैंने बल्कि मजाक में कहा कि ये ऑन रिकॉर्ड डाल दीजिए इसके अंदर मीटिंग के अंदर कि आपने ऐसा कहा है और उसको एक्नॉलेज किया। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक विल कंटिन्यू विद अदर्स। थैंक यू राजपाल सर। इससे पहले भी फाइनेंस कमेटी के मेंबर रहते हुए आपने इस हेफा का जबरदस्त विरोध अपने प्लेटफॉर्म पे आपने किया है और आज भी आप कर रहे हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीमा दी ने बड़े ही एक अग्रेसिव मोड में पूरा होमवर्क करके सारे इश्यूज, ईच एंड एवरी इश्यूज कंसर्न विद द यूनिवर्सिटी टीचर्स हैज बीन टेकन बाय सीमा दास जी इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग एंड वी प्राउड ऑन ऑल ऑफ यू, चाहे हमारे एसी मेंबर हों चाहे ईसी मेंबर हों। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर चंद्रमोहन नेगी सर, आवर frontliner activist in academic council, kindly speak on the issues. Honorable Aditya Narayan Misra ji, Rajpal ji, Seema Didi,
and all my dear friends. सबसे पहले, first of all, I will like to congratulate Seema ji and Rajpal ji, जो again they succeeded on forming a committee to look into the issue of on-leave. Friends, I would like to inform you सर आप म्यूट हो गए हैं। Am I audible? यस। मैं ये कह रहा था कि ये जो इशू है, issue of on-leave or calendar, it was raised by our group and I was the person who raised during the UCG's time. Because अगर आप याद कीजिए 2 साल से किसी को कोई लीव नहीं मिली थी because of the corona, and that is culminated into a formation of committee. So I will definitely congratulate Seema Didi and Rajpal ji. Coming to the next issue, we intellectuals are eyes and ears of society. So we see whatever is coming there. Right from the 17, 18, Aditya ji and R is saying that there is a consistent move towards the privatization and commercialization of the education system, especially the higher education system. And that is going to be evidently clear. Now you see earlier, first of all, the undergraduate framework, where there is a drastic cut in the credits. In the earlier AC meetings, 196 credit framework was passed, and very hurriedly that was reduced to 176. And I don't know, we are not sure that that will be passed in total. Secondly, then CUCA. So in every front, our return dissent is recorded. It's not so that like other group, our group, who oppose for the sake of opposition, and we oppose as well as registered our opposition in writing. We oppose furiously in the academic council meeting. So coming to the present latest AC meeting in 22nd, the moment academic council meeting starts, unfortunately, my dear friends, what happens? A very senior professor of X department stands and comments on the slavery of the Y department. And there was a slanging of some particular community, whether I will not name, from a particular reason. Then another professor stands up, she is of a different faith, and how she is blaming that the professor of other faith tries to represent herself as a more liberal in her own community. So is that the academic council? That is the question I am taking before you. If that is the platform to discuss these things. We should not forget, I stood up and I said, in this discussion and debate, we are forgetting what the great visionary son of India, Pandit Nehru, said about university. He said a university stands for humanism, for tolerance, for reason, for the advantage of ideas and for the search of truth. That is his words. We should not forget. Thereafter, I come to the points, because our Vice Chancellor ji is on mission. He wants our university to be one of the best universities in the world. And he is definitely on that move. So I said, sir, certain observations are there which we, the R as a group, is raising consistently, and without solving these problems, the aim and the goal which you set is difficult to achieve. So I'm going to spell out one by one what are those issues, what are those problems impacting the University of Delhi.
One is infrastructure. That is very important. Infrastructure here means the hard infrastructure as well as the soft infrastructure. We should not forget that country like America is investing a huge amount for coming generations soft infrastructure. But unfortunately, you see, the infrastructure which we have goes back to the pre-OBC and EC reservation as well as this expansion. So there is a huge gap between the existing infrastructure and required infrastructure in terms of both the hard infrastructure as well as soft infrastructure. Now you see, most of the buildings are pre-reservation period and not a single building has been set up in recent years. So there is a hue and cry. The access students are there, but space is not available. On the other hand, regarding the soft infrastructure, if moreover you see there is an acute shortage of the computers. If computers are there, internet facility is not there. If internet facility is there, speed is not there. Within this problem, we have another kind of problem which most of the groups or we used to ignore. That is the problem of physically challenged students, so-called DIVYANG students. So they are also facing the acute shortage of hard as well as soft infrastructure, whether in the space in library or other instruments or tools required by these boys. So these students are already being, or you can say nature is very hard to these students. So by not giving the proper amenities to these students, we are doing great disservice to this student community. Second issue which I raised is the problem of guest, as Seema Didi has says, guestification. Dear friends, as you know, in our University Delhi, in the departments, there is complete stoppage of the recruitment of ad hocs, which is unfortunate. Only guest teachers are taking place in the new guest teachers are taking place in the department. So I told that most of the teachers, if you see the resume of the professors and teachers in the department, they all come to the department after spending a good number of years in the colleges. But you see, guest teachers are directly coming from just completing the PGs. So what should be the solution? Problem is there. So what should be the solution? I said our esteemed professors as well as senior professors who are retiring or retired can be hired. But problem with these professors is that they have to pass through an interview. I said, what will you ask the professors in the interview? They already spent at least 40 to 41 years in the department. So I requested the chairman of the academic council, the honorable vice chancellor, that senior professors and retired professors must be waived off of the interviews. That is another issue I flagged out. The third one is GEM. GEM is government e-market. Now you see how the GEM is making a big problem in the way of research and teaching. The professor, one of the very eminent research scholar, wrote me that these are the problems they are facing. The number one is small stationery items in little quantities can't be purchased from the GEM. GEM is government e-market. Secondly, she writes, card-based system doesn't allow multiple small items to put together and order as a single order from the vendor on GEM. Another clause which is of recent origin, that bid-based system on GEM now allows only procurement from the Make in India suppliers. Now large equipments worth lakhs is not made in India, but in US and Europe. So researchers, the scientists, the professors, all are spending their valuable time on only paperwork.
This is the another problem regarding the gen. Fourthly, the issue of non-teaching. Dear friends, non-teachings are our colleagues who are working very hard to realize the objectives, the goals of the university system in the country. But a few of non-teaching people in the university setup, they come to me and said, sir, some connected people are joining a X department and retiring from X department. So I asked August House if there is any transfer policy for the non-teachings. Because if transfer policy is there, that should be fair and transparent. It is my own assumption that by working on the different chairs or by working on the different positions, the efficiency of a person increases. That is one of the issue which I raised in the academic council. Then the library. J.K. Rowling, the author of Harry Potter, said, when in doubt, go to the library. So two issues related with library. One is staff crunch and space crunch. And second one is drastic cut in funding. So you see, other than central library, many of the other premier departments have their own libraries. But over the year of time, owing to non-hiring of the new staff, these libraries are in shambles. Some of them are on the worst of collapse or closure. I gave an example of the music department where many valuable items and instruments and recordings are there, and those are maintained by the teachers themselves. There is no expert or librarian to take care of those items. So tell me, professors are meant to maintain the library system. Are they meant for the working of administrative work? So, and central library. The space in central library is same as it was 40 years ago. Okay, as you know, after the implementation of the OBC reservation, EWS reservation and expansion, about 50% increase in the student intake has been taken place, but the space is more or less same. And second issue, which is very pertinent and important, is that which again supports our arguments of privatization and commercialization. There is a drastic cut in the fund for the library system. I believe library is a living organization, and there is a consistent growth in organic growth in the library system. Until and unless you fund appropriately, that system is going to be dying. So, and you see, because as a student of economics, as a teacher student, we always supplement the facts. This is what I say. So now you see, I am a member of library in South Campus. 2018-19, 65 lakhs were given. 19-20, 70 lakh. 2021, again 70 lakh. And 21-22, 30 lakhs. So you see, more than half has been reduced. Thereafter, another very important point, issue which is there, you know, a number of theses or dissertation goes outside of the country to the various experts in the foreign countries. And you will shocked to know that only 1,500 is paid for the evaluation of those theses. 15% is moreover about the $10. Even other day I was searching in Lahore University in Pakistan gives $500 for the evaluation of thesis, but we are paying just 1,500. So this is very concerning point, and Vice Chancellor also agreed. Later on, I was told by Dean examination that a committee is already in place to look after these issues. Then I come to the point of promotion. So many anomalies are there with the promotion to the teachers. You see, nowadays we are coming
to the point that a number of teachers are facing various issues regarding the promotions. One of the issues is that under MPS, merit-based system 1998 or CAS 2000, the ad hoc teachers' experience and experience for postdoc was not there. But UGC regulation 2018 gives equal weightage to the ad hocs as well as the postdoc. And it states, and SOP or university release states that it is applicable to the all pending cases. So a number of our esteemed fellows who were eligible in the MPS system, they are asking to include the ad hoc experience as well as the postdoc experience. But the university is saying no. Now, as a result, these people are losing 4 to 5, even 7 years of their career. So this is what I raised in the academic council, and this is unfair and injustice to the hardworking and sincere teachers of University of Delhi. Lastly, the issue which is concerning to all of the teachers who joined this university soon after 2004. As you know, my friends, after 2004, we all are covered under new pension scheme, that is NPS. And unfortunately, the union government is making discrimination between the employees of union government and the employees of autonomous bodies. So 2009 onwards, there is a provision for central government employees parents for the accidental death and accidental complete disability. In case of complete disability, the pension for their near and dears. This is not applicable to the autonomous bodies. Again, in 2017, you see the gratuity and death gratuity for the employees of autonomous bodies, including the universities, are stopped. So we requested the Secretary Academic Council to pass a resolution through the Academic Council that there should not be discrimination against the autonomous bodies, and we all should be covered under this. We should be treated fair and equal vis-a-vis central government employees. These are the issues which I raised in Academic Council 0 hour. So dear friends, thereafter, regarding the CU seated, I argued for certain apprehensions which is coming to true, and today there is an advertisement and many of our friends shared in social media. So in total, our dissent is noted, and what are our apprehensions, which I will spell out one by one, and these issues are already being stated in the Academic Council. So friends, this CU seated is going to be number 1, gender bias, number 2, urban bias, number 3, private sector bias, number 4, elite bias, and lastly, this system is going to destroy the secondary school system in the country. So one by one, I'm going to explain how. First of all, that is gender biasness of the CUC. You see, if you take a statistical figure of all the competitive exams being undertaken in this country, be it UPSC, NEET, G, you will find that boys are always ahead of girls in all these competitive exams. And good thing in the current system is that in University of Delhi, girls are in favorable position currently. So our apprehension is that when CUSET is implemented in full speed, that there is going to be a gender bias. The sex ratio will deteriorate. That is one apprehension, because the reason being that the parents are not going to spend more amount for the girls' education and girls' coaching.
That is one apprehension. And secondly, they look urban bias. As you see through the various reports of ASA, the students in the rural areas don't have the efficiency of the mathematics and reasoning. Even if you go to the rural hinterland of the country, many of the +2 students will not aware of what is the reasoning, what is the general awareness. So that is going to be imparted in the CUSET. So our concern is that this system is going to favor the students coming from the urban areas vis-a-vis rural areas. Thirdly, this system is going to favor the private sector schools, because we know the government school students mathematics and reasoning is poor. So again, this system is going to be biased in favor of private sector. Fourthly, the elite bias, those who can pay for the coachings, they are going to make it into the CUSET. And today's advertisement in the one of the premier newspaper sports our appreciation that all the premier coaching institutes has started coaching for the CUSET. And lastly, you see, it has come from our observation and through our research that the students who are preparing for NEET are rarely attending the +1, +2 schooling. So now CUSET is in place. So there is an apprehension that students will go only for the coaching issues, and they will not focus on the whatever is being taught in the classes, because that is not going to help them in the CUSET. So in this way, this CUSET is going to destroy the schooling system in total. Thank you. These are the issues I raised in academic council. Thank you, Ashok ji. Thank you, CM Negi sir. आपने number of issues you have raised in the academic council, whether it is UGCF or the recent development that is very painful. I think CUCET, common Central University Common Entrance Test, is really a big challenge for throughout the country. I think for middle class and poor family. अभी तो आपने देखा भी होगा कि आज एक बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर्स में फर्स्ट पेज पे उसका एडवर्टीजमेंट भी आने लगा है कोचिंग सेंटर्स का। तो ये बहुत ही एक खराब सिचुएशन होने वाली है, जो एकदम डिप्राइव्ड जो सेक्शंस है सोसाइटी के, उन सब के लिए। आपने जो इश्यू उठाए थे, अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट टीचर इंस्टीड ऑफ एडहॉक टीचर्स, लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी सिस्टम्स, उसके साथ जो फंड कट का आपने लाइब्रेरी का डेटा आपने दिया, बहुत ही इफेक्टिव हो रहा। और प्रमोशंस का जो एनोमलीज हैं या और जितने सारे इश्यूज आपने उठाए हैं, वो रियली कंसर्न थे हर टीचर के लिए। और एज ए दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने एकेडमिक काउंसिल में इन सब चीज़ों को उठाया। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो एकेडमिक काउंसिल के ही हमारे एक एक्टिव, बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं, डूटा के ऑफिस बीरर भी वो रह चुके हैं, डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी। आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी जो इश्यूज जो बच गए हों किसी से, वो भी आप इन इश्यूज को इसमें ले लीजिए और आप हमें बताइए। थैंक यू। धन्यवाद अशोक भाई। और जिस तरह सीमा दीदी की बातों को सुनकर राजपाल सर गौरवान्वित होते हैं अंदर, उसी तरह हम नेगी सर की बातों को सुनकर गौरवान्वित होते हैं। और नेगी सर जिस कर्मठता से और जिस भय को छोड़कर अपनी बात रखते हैं, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। मैं सही में पहला, अभी तक मेरा ये 4 मीटिंग हो गया, 4 मीटिंग में जब एक डिपार्टमेंट का कोई भी टीचर एकेडमिक काउंसिल का कुछ बोलता नहीं है और नेगी सर को हम लीड रोल देते हैं, इन्हीं से शुरुआत कराते हैं और बिल्कुल जज्बे से अपनी बात रखते हैं। तो नेगी सर, मैं सबके सामने फिर आपको पुनः बधाई देता हूं कि आप जिस तरह अपनी बात रखते हैं, सेम जहां जिस तरह उन्होंने वहां बात रखी थी, वही बात तनिक भी उसमें दुराव छुपाव नहीं किया उन्होंने, वही सारी बातें उन्होंने रखी। देखिए, आज अशोक जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं आज
अशोक जी का एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था जिसमें सीयू सेट के लिए अब थिंक सीयू सेट थिंक सीएल, थिंक सीयू सेट थिंक सीएल की जो बात अशोक जी ने लिखा था, और वही चीज आज हमने देखा न्यूज़पेपर में और फेसबुक पे भी देखा। तो जो हमारी चिंता थी, जो हम 2017 में डॉक्टर आदित्य मिश्रा जी ने हेफा की बात की थी, जिस प्राइवेटाइजेशन की बात की थी, जिसको लोग कह रहे थे कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, वह अब हमारे सामने है। हमें किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र लिखते हैं, झूठ आज से नहीं अनंत काल से रथ पर सवार है और सच चल रहा है पांव पांव। भले ही हम पांव पांव चल रहे हैं, हम सच की बात कर रहे हैं और उस सच को हम अंतिम समय तक नहीं छोड़ेंगे। मैंने शुरुआत एसी की मीटिंग में 30 EL की मांग को लेकर की थी कि जिस तरह नॉन टीचिंग को 30 EL मिलता है वैसे ही 30 EL हमें मिले। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब सीमा दीदी ने उस बात को फिर से वहां उठाया तो शायद कमेटी बन गई। तो जिसकी शुरुआत हमने एसी की मीटिंग में लगातार हम करते रहे थे और उसको सीमा दीदी और राजपाल सर ने आगे बढ़ाकर आगे कराया, इसके लिए उन दोनों का बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, मैंने 14 साल एडहॉक पढ़ाया है और मैं किसी भी मीटिंग में एब्जॉर्प्शन के बिना कुछ रह ही नहीं पाता। उसके लिए लोग मुझे कुछ भी बोलते रहे, बल्कि एक किसी मेंबर ने कहा कि आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करूंगा, जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगा। एब्जॉर्प्शन कमेटी की मांग हमेशा की तरह एब्जॉर्प्शन की बात से हमने अपनी बात रखी और हमेशा की तरह वाइस चांसलर का चुप रहना बहुत ही दुखद रहा। फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात, पिछली मीटिंग में भी मैंने अपनी बात जोरदार तरीके से फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात की थी और इस बार भी फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात की हमने। लाइब्रेरियन की बात की कि क्यों नहीं सभी लाइब्रेरियन को प्रोफेसर बनाया जा रहा है। क्यों फिजिकल एजुकेशन टीचर के जिन्होंने अप्रैल 2020 में 2021 में जिन्होंने अप्लाई किया था प्रोफेसर के लिए, उनका अभी तक प्रमोशन क्यों नहीं हुआ। साथ ही B1 और B2 को लेकर जब हम सीयू सेट का सिलेबस एक परफॉर्मा देख रहे थे तो उसमें स्पोर्ट्स जैसे सब्जेक्ट को NSS से ऑब्लिक कर दिया गया था। हमने उसको डिमांड किया और उन्होंने कहा कि हम इसे जरूर अलग करेंगे। हमने तो ये भी कहा कि आप स्पोर्ट्स को फिजिकल जो सब्जेक्ट है उसको आप B1 में रखिए और उसके लिए वे तैयार भी, बातों से लगा कि शायद वो तैयार हो जाए, लेकिन कितना काम होता है वो देखने की जरूरत है। फिर हमने ये भी बात की कि कोरोना काल में मैंने तारीफ की उस समय VC की कि VC साहब आपने जो स्टूडेंट कोरोना काल में एक्सपायर कर गए थे उनको आपने PhD की डिग्री दे दी उनके मरणोपरांत। तो क्यों नहीं मरणोपरांत ऐसे टीचर जो जिनका प्रमोशन ड्यू रहा, जिनका प्रमोशन 2014-15 में हो सकता था, वो कोरोना काल में एक्सपायर कर गए, तो उनको आप क्यों नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के 100वें वर्ष पे, स्थापना के 100वें वर्ष पे उनको क्यों नहीं आप प्रमोट कर दे रहे हो। शायद इस पर कुछ बात बढ़े आगे, इसको भी देखने की जरूरत है। 12 कॉलेज की सैलरी, मैंने कहा कि मैम सर आप अभी तो आपने दिला दिया 12 कॉलेज की सैलरी, लेकिन ना LTC मिल रहा है ना मेडिकल मिल रहा है, और क्या गारंटी है कि 1 तारीख को फिर पुनः सैलरी मिल ही जाए। तो इस पर आपको बैठकर बात करने की जरूरत है। फिर मैंने कॉलेज से आए डिपार्टमेंट में जो टीचर हैं, भले ही वो 3, 4, 5 ही क्यों ना है, क्या गुनाह किया था नेगी साहब ने, मैंने इनका नाम लेके बात किया वहां पे, क्या गुनाह किया था कि ये कॉलेज छोड़ के डिपार्टमेंट में आ गए। क्यों नहीं आप इनको प्रमोशन दे रहे हैं।
इनके साथ के कॉलेज के लोग प्रमोटेड होकर आगे बढ़ गए, तो इनकी गलती ये है कि डिपार्टमेंट में आ गए। इसी तरह एनपीएस की बात हमने जोर शोर से बात की, ग्रेजुएटी की बात की हमने, और ग्रेजुएटी के बिना हमने उन्हें बताया कि किस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेजुएटी या एनपीएस पूरा मिल रहा है। यदि किसी को कुछ मिसहैविंग हो जाता है तो उन्हें पुराना पेंशन भी मिल रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट मिल सकता है तो दिल्ली विश्वविद्यालय में क्यों नहीं। और मुझे राजेश झा जी ने समझाया था कि आपको इस तरह बात करनी है। सही वैसा ही हुआ। रजिस्ट्रार ने कहा हमें कि हमने चिट्ठी लिख दिया है, कोई चिट्ठी का जवाब नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि इस हाउस से आप रेजोल्यूशन पास कीजिए और उनको लिख कर दीजिए कि ये केवल एक रजिस्ट्रार की चिट्ठी नहीं है, ये पूरे एसी मेंबर की चिट्ठी है और एसी मेंबर ने हाउस में कहा है इस पे आप जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर लिखेंगे। इसी तरह शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा और शब्द से मरहम। पीड़ा और मरहम की बात करते हुए फिर हमने उनसे एक बहुत ही जो आवश्यक चीज पे उस पर बात किया हमने कि बीएलएड कोर्स में अब ठीक है राइडर नहीं होना चाहिए, मैं भी मानता हूं राइडर नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसको हम डिग्री देंगे उसके लिए तो कुछ हो। बीएलएड पढ़ाने में जिसका एडमिशन हो रहा है वो कम से कम 2 लैंग्वेज तो पढ़कर आए, वो मैथ पढ़ के तो आए, लेकिन उस पर नहीं माना। एक चीज उन्होंने जरूर मान लिया कि एनसीटी में लिखा हुआ है कि 50% वाला, उस पर उन्होंने मान लिया और उसको करेक्ट भी कर लिया। मैंने कहा कि सर आप महामहिम हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक रामानुजन कॉलेज में बीवॉक की डिग्री नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो किस डिपार्टमेंट से किसी को पता ही नहीं है। मैंने बहुत जोर से पीएचडी का विरोध किया, जो एसओएल से पीएचडी होने वाला था, और हमारे विरोध के कारण वो डिफर भी हुआ और तुरंत वहां से हटा लिया गया कि पीएचडी एसओएल का प्रोग्राम नहीं होगा। हमारा देखिए, नए कोर्स का हम विरोध नहीं करते, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे नए कोर्स जिसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है, फिर आप करते रहिए। मैंने उनसे कहा कि ठीक है एफएमएस की क्या जरूरत है, तो आप एमबीए करा दीजिए, एसओएल से करा दीजिए एमबीए। लेकिन करना उन्हें है, सुनना उन्हें है। बस यही सोचकर हर मुश्किलों से लड़ता हूं, धूप कितनी भी तेज हो समंदर सूखा नहीं करते। हम उस समंदर की भांति हैं, हम सूखेंगे नहीं, हम अपनी बात उठाते रहेंगे। इस तरह मेरे साथ कपिला जी भी थी। कपिला जी ने बहुत सारी बातों को वहां पर लिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया हिंदी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय का। वो अब एक्टिव नहीं रहा। हम बात तो कर रहे हैं, लैंग्वेज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जिस लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, जिस पढ़ने पढ़ाने की बात कर रहे हैं, कितनी किताबें हिंदी में उपलब्ध है। जो पहले ट्रांसलेट हो जाया करता था वह बिल्कुल भी हमें दिखाई नहीं देता। इस तरह मैंने इनोवेशन प्रोजेक्ट की भी बात की थी। मैंने कहा आप भले ही किसी को कुछ लोग गजराज कहा करते थे, लेकिन उन्होंने जो यूनिवर्सिटी में इनोवेशन प्रोजेक्ट का एक नया रूप लेकर आए थे, वह क्यों 2016 के बाद बंद हो गया। क्या जरूरत नहीं है कि किसी का कोई स्कोपस में जर्नल छपता है, स्कोपस जर्नल में किसी का कुछ छपता है तो उसको कुछ ना कुछ मिले। वैसे ही इनोवेशन प्रोजेक्ट क्यों ना मिले। नेगी सर ने बहुत अच्छे से उठाया था जैम के बारे में, हम सबको उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने इनोवेशन प्रोजेक्ट की बात की। उसी तरह कपिला जी ने भी एक बहुत सुलगता मुद्दा उठाया। अभी पिछले फाइनेंस कमेटी में मैं जेएल गुप्ता सर अभी का भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत सारी चीजों को, जैसे जो हम कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हुआ करते हैं, बर्सर हुआ करते हैं, उन्हें 400 रुपया मिला करता था,
अब 400 से 4000 रुपया हो गया, बढ़ा 400 से 3500 रुपया हो गया। जो कॉलेज के वो थे जिन्हें पहले एक्स्ट्रा आने पे 400 कुछ रुपए मिला करता था, अब वो 1200 रुपया हो गया। तो उसी तरह कपिला ने रिसर्च जो हमारे रेजिडेंट ट्यूटर हैं, वार्डन हैं, प्रोवोस्ट है, उनका रेम्यूनरेशन जो है बहुत ही कम है, जबकि वे 24/7 काम करते हैं। तो क्यों ना उनका रेम्यूनरेशन बढ़ाया जाए, उनको कुछ सुविधाएं दी जाए, इसको भी बहुत जोर जोर से उठाया गया। फिर कपिला ने एक और बहुत अच्छे से मुद्दा उठाया, वो कहा कि रोस्टर को लेकर आज भी रोस्टर में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक एक कॉलेज के 3-3 बार रोस्टर यूनिवर्सिटी में आता है और वापस चला जाता है। उसके पीछे का तर्क था, कपिला जी ने बताया कि देखिए, यदि हम कॉलेज में ही अपने सारे लाइजन ऑफिसर को ट्रेंड कर दें, उन्हें बता दें कि हमें कैसे करना है, तो शायद ये समस्या ना हो। और कॉलेज में कैसे जो लाइजन ऑफिसर है उनको ट्रेंड किया जाए, उसके लिए एक प्रोग्राम किया जाए। इतने सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, एक प्रोग्राम और किया जाए। इसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से उठाया। और रिजर्वेशन को लेकर कि क्यों ना हॉस्टल में, सुधांशु जी ने भी उठाया था कि सुधांशु जी ने भी बहुत अच्छे से रिजर्वेशन को उठाया था, और कपिला जी ने भी उठाया कि क्यों ना हॉस्टल में ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाए, और मिलना भी चाहिए। हर जगह जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए। इसी तरह हमने आगे अपनी बात की, क्योंकि मैं कम समय लूंगा फिर। अभी ईएल वाली बात, हम लगातार 24/7 3 सालों से काम कर रहे हैं, जिसका 30 ईएल की बात जो शायद कमेटी भी बनी। और हमने 12वीं परीक्षा को जिस तरह यह सीयू से खराब कर रहा है, अभी नेगी सर ने बहुत अच्छे से बताया। अब आप देखिए कि 12वीं परीक्षा का कोई महत्व नहीं रह गया। आप कहते हो कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, मैं भी कहता हूं कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन क्या पढ़ेगा? आके रटेगा? यदि किसी का बेसिक क्लियर नहीं है, जिस बच्चे को यह पता है कि 12वीं का नंबर से हमें कुछ होने वाला नहीं है, 10वीं की बोर्ड आपने खत्म कर दिया, 12वीं के बोर्ड का कोई महत्व नहीं रह गया, एमए के बाद, एमए आप 1 साल करके बीए के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर रहे हो, तो हम करना क्या चाहते हैं? यदि 12वीं का नंबर नहीं तो बच्चा क्यों 12वीं, वो तो 10वीं में आते ही अपनी थिंक ड्यू थिंक सीएल करना शुरू कर देगा। यदि ड्यू के बारे में सोचना है तो कैरियर लॉन्चर जाएगा, उसके बाद बहुत सारे लॉन्चर आ जाएंगे। लॉन्चर की कमी नहीं है, जो आपके सामने रटाएंगे और आपको एग्जाम दिलाएंगे। तो जो हमारा बेस है, क्रिएटिविटी है, वो कहाँ रह गया? जिस पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय जाना जाता है वो कहाँ रहा? और इसीलिए हमने सीयू सेट पे डाइसेंट दिया, बिल्कुल खुल के डाइसेंट दिया कि हम इस पे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा विरोध आप रखें। एक कोर्स है दिल्ली विश्वविद्यालय में, बीएससी ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन। उसको जब मैंने ध्यान से देखा, खैर उन्होंने तुरंत करेक्ट भी कर लिया उस चीज को, अभी तक उसमें 50% जो मार्क्स होता था वह मार्क्स के ऊपर था और 50% आपके प्रैक्टिकल पे हुआ करता था। अब यदि हम उसको एक पहले 70-30 करके आए, फिर 60-40 किया उन्होंने, लेकिन बाद में अंततः ये 50-50 इन्होंने कर दिया। क्योंकि जिस बच्चे को स्पोर्ट्स करना है, जिसको खेलना है, वह खेलेगा, क्योंकि खेल भी रहना, फिट होना भी जरूरी है। तो खैर इसको उन्होंने हमारी बात मान ली और उसको कर दिया 50-50, वहां पे तुरंत आ गया। इसी तरह R&D ग्रांट इनोवेशन की खैर बात कर दी सर ने। फिर हमने जो प्रमोशन पे, जो चेहरा देखकर प्रमोशन की बात हो रही है, आज भी बहुत सारे कॉलेज में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। यह बहुत जरूरी है
कि जिसका जो हक है उसको मिल जाए। हम बिल्कुल, कहीं तो प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है, कहीं पे उसकी सूद नहीं ली जा रही है। हमने मांग की कि आप एक क्लैरिफिकेशन तो कीजिए कि जब पैनल चला जाए तो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर वहां पे, मैं ऐसी जगह जानता हूं जहां पैनल गए हुए 6 महीने हो गए, पैनल जाने के बाद भी वहां इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है। ये तो बिल्कुल दादागिरी है, चाहे किसी की भी दादागिरी हो, लेकिन दादागिरी नहीं होना चाहिए। फिर मैं, चूंकि 5 दिसंबर का लेटर संयोग से, उस समय मैं वाइस प्रेसिडेंट था, मैं लेटर लेके गया था उनके पास। मैंने उनको पढ़कर बताया कि आप एक क्या कह रहे हैं, या तो आप यूजीसी की बात मान लीजिए, सरकार की बात मान लीजिए, आप नहीं चला लीजिए। जब यूजीसी लिख के दे रहा है कि जो एडहॉक काम कर रहा है उसको बुलाया जाएगा, फिर पॉइंट सिस्टम की कहां से बात आ गई? या तो आप यूजीसी को मत मानिए, और क्योंकि मैं लेटर लेके गया था कि कोई बोले कि लेटर नहीं आया तो मैं उन्हें दिखा देता, लेकिन सबने माना कि लेटर आया हुआ है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो पढ़ा रहा है। मैंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है कि 30 दिन में EWS का आ जाएगा, आप वो तो लेके आए नहीं। आज 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, 2 साल तो पूरे हो गए, तीसरे साल में हम चले गए। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी एडहॉक पढ़ा रहा है, क्योंकि हमने इस बात से उनकी शुरुआत की, उन्होंने कहा कि जो भी, हम सबको पता है कि जो नया आ रहा है स्कीम, सबको बहुत लुभावना लग रहा हो, लेकिन इसमें वर्कलोड तो जाएगा, जाना तय है। कोई कुछ भी कर ले, वर्कलोड कम होना जरूरी है। हमने उनसे कहा कि आप एक क्लियर लिखिए कि कोई भी एडहॉक इस 100 नए वर्कलोड के कारण डिस्प्लेस नहीं होगा। वो मान गए। मैंने कहा आप यहाँ लिख तो दोगे, जब आप यूजीसी की बात नहीं मान रहे हो लिखे हुए बात को, तो कल आप पलट जाओगे तो हम क्या कर लेंगे? क्लियर यूजीसी के लेटर में आप सबको पता है, क्लियर लिखा है कि कोई भी नहीं हटाया जाएगा, और हमें बोलने की जरूरत नहीं है कहां हटाया गया, कितने लोगों को हटाया गया, क्यों हटाया गया। यह बहुत आवश्यक है। आप भले ही अपना गुणगान कर लो कि ये सबको, इतने 30 वाले को, 60 वाले को, 65 वाले को हम बुला रहे हैं। अरे भैया, जब क्लियर यूजीसी ने आपको लिख के दिया है, या तो आप उनसे बड़े हो जाओ। क्लियर लिख के दिया हुआ है MHRD ने कि जो पढ़ा रहा है उसके कितने भी पॉइंट हो, पॉइंट का जिक्र ही नहीं है, फिर आवश्यकता क्या है इसकी? तो हम तो उस विचार से आते हैं। हमने जिनसे सीखा है उनका यही कहना है कि वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, वो मुझे कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। तो हमारी आत्मा जो है सदैव शिक्षकों की बात को उठाने के लिए है, क्योंकि हम किसी पार्टी वाटी की बात नहीं करते, हम केवल और केवल शिक्षक हित की बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं। और अपने चेयरमैन से, आदित्य मिश्रा जी से हमने यही सीखा है, हम अकेले हैं, अकेले रहेंगे, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहेंगे, हम उससे पीछे हटेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चाहे वो 5 दिसंबर का लेटर हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन कमेटी की मांग हो, एब्जॉर्प्शन की बात हो, प्रमोशन की बात हो, पेंशन की बात हो, हमने ईमानदारी से अपनी बात रखी, और न केवल रखी बल्कि अपनी बात सुनवाई भी। जब कोई बीच में बोल रहा था तो हमने कहा आप चुप हो जाइए और हमारी बात सुनिए, क्योंकि हम यहाँ सुनाने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं, हम आपको सुनने नहीं आए हैं। और लोगों ने हमारी बात को सुना भी। नेगी सर ने बहुत अच्छा कहा, वहां पे जो प्रोफेसर लोग हैं, किसी प्रोफेसर के पास नंबर बढ़ाना, हमें नंबर बढ़ाना नहीं आता, बस आप लोगों को ठीक लगा हो तो नंबर गेन करने नहीं जाते, हम वहां अपनी बात रखने जाते हैं और अपनी बात अडिग होकर रखते हैं और मनवाते भी हैं, करवाते भी हैं, क्योंकि हम केवल और केवल शिक्षकों की बात करते हैं। अशोक जी, आपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। हम ऐसे लोगों के साथ रहे हुए हैं, हमने वैसे एक्टिविटी को देखा है। 2002 में जब मॉडल एक्ट आया था,
मैं आदित्य नारायण मिश्रा जी के साथ था, मैं इनको जमीन पर लेटते देखा है, अपनी बात को कैसे रखा जाता है इनसे सीखा हुआ है। और जो लोग हेफा कहते थे, डूटा की मीटिंग में कहते थे लोग कि हेफा वापिस हो गया, अब कैसे हेफा से लोन लेने की बात कर रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत पहले आपसे जो कहा था कि झूठ आज से नहीं अनंत काल से रथ पर सवार है, लेकिन सच चल रहा है। भले ही वो पांव पांव चल रहा है, हम पांव पांव चलेंगे, लेकिन अपनी बात जरूर रखेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद आलोक पांडे जी। आप हमेशा से ही, मैं सालों से सुनता आ रहा हूँ, आपका एक्टिविज्म, आपके संवेदनशील और सक्रिय भागीदारी हमेशा ही डूटा के हर एक्शन प्रोग्राम में रही है और एएडी के फोर फ्रंट पे आप लोग हमेशा लड़ते रहे हैं। आप लोगों से हम लोग सीखते आ रहे हैं। आपने जितने भी इश्यूज उठाए हैं, चाहे वो लाइब्रेरियन का हो, सिलेक्टेड प्रमोशन इन कॉलेजेस हो, फिजिकल एजुकेशन टीचर का इश्यू हो, या कोरोना में जो लोग जान गंवा चुके थे उनके लिए प्रमोशन की आपने बात की हो, या फिर डिस्क्रिमिनेशन इन बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का बात हो, रिसर्च ग्रांट की बात हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोगों ने, आपने सुधांशु जी ने, कपिला जी ने और नेगी साहब ने जो 5 दिसंबर लेटर का जो आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात वहां पे मनवाई, वो बहुत ही एक सराहनीय कदम आप लोगों का था और उसके लिए हम आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कपिला जी ने जो इश्यूज उठाए थे, किसी वजह से आज कपिला जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाई हैं, वो आउट स्टेशन है। मैंने बता दिया था। हाँ, वो सारे इश्यूज हैं। उसके अलावा उन्होंने जो रिवाइज रिम्यूनरेशन ऑफ वार्डन, प्रोवोस्ट एंड रेजिडेंट ट्यूटर्स की भी उन्होंने बात किया था। और जो आपने बोला सबसे इम्पोर्टेंट की रोस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर लाइजन ऑफिसर्स ऑफ कॉलेजेस मस्ट बी देयर, और रिजर्वेशन से रिलेटेड जो इश्यूज कपिला जी ने उठाए वो बहुत ही अच्छे थे आप सभी लोगों का। मैं एक बार लिसनर से कहना चाहता हूँ कि कोई क्वेश्चंस या क्यूरी है Ashok, तो can I make a brief? yes sir, I am handing over to you just after few seconds. मैं सभी लिसनर से कहना चाहता हूं कि इस डिस्कशन के एंड में हम क्वेश्चंस को भी लेंगे, तो किसी के भी अगर क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट हैं एसीईसी मीटिंग को लेके या कोई और इश्यू के बारे में वो पूछना चाहते हैं, तो इस चैट बॉक्स में या हमारा एएडी का जो फेसबुक पेज है उस पर लिख सकते हैं। हम उनको 1 by 1 सभी क्वेश्चंस को लेने की कोशिश करेंगे। मैं आदित्य नारायण मिश्रा सर को कंक्लूजन के लिए, इस डिस्कशन के कंक्लूजन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदित्य सर। मैं पुनः बताना चाहता हूं कि 2017 से, बल्कि 2016 से ये प्रक्रिया का चालू हो गया था कि कैसे यूनिवर्सिटीज का फंड्स को कम किया जाए, यूनिवर्सिटी में दखल अंदाजी, एकेडमिक काउंसिल को मिनिमाइज करना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मिनिमाइज करना और ग्रांट्स को कम करना। एडी ने हमेशा शिक्षकों को और समाज को बताने की कोशिश किया कि ये ना शिक्षा के लिए, शिक्षा का हित में है, ना शिक्षकों का हित में है, ना सामाजिक परिवर्तन का हित में है। और आप जिन हेफा की बात आज चल रही है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात चल रही है, हेफा से जब आप लोन लेंगे, ये ग्रांट नहीं है, ये हमें खोल करके सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब ये लोन का रिपेमेंट होगा, ये बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? ये बर्डन स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में नेगी साहब ने, आलोक ने, सीमा जी ने, राजपाल जी ने, सुधांशु, कपिला जी ने, सब ने बहुत अच्छी तरीके से हर जगह पर ये बात बताया। और जो हमारा ग्रुप का न्यूज़लेटर में, हमारा आर्टिकुलेशन में हमेशा सदैव रहा है कि इसमें सामाजिक परिवर्तन असंभव होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो लोग पैसा देंगे, पढ़ेंगे, अर्बन सेंटर्स में लोग फायदेमंद रहेंगे। ग्रामीण एरिया से जो हमारे क्लासरूम में आज बच्चे आते हैं और मेडिकल या बाकी इंजीनियरिंग के लिए, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए वह एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है।
लेकिन जो 12th क्लास का एग्जामिनेशन बच्चा स्टूडेंट पास किया है, उसका 10 दिन के बाद हम उसको नकार देते हैं और कहते हैं कि जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में होगा उसके आधार पर आपका होगा। ये सरासर गलत है। इसमें बहुत सारे, जो नेगी साहब ने बताया, बहुत सारे इश्यूज है और जो हमें इसका खामियाजा भुगतना होगा। शिक्षक के लिए सामने जितना समस्या नहीं है, स्टूडेंट्स के सामने ये एक ट्रॉमा के रूप में उभर करके आए। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सभी लोगों को, खास करके हमारे एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सभी सदस्यों को, जिन्होंने पूरी कन्विक्शन और शिद्दत के साथ इन मुद्दों को उठाया। मुद्दा क्या है? एब्जॉर्प्शन की बात हम करते हैं। गेस्ट फैकल्टी की संख्या तय हो रही है कि 50% गेस्ट फैकल्टी रहेगा। ये सब इसी का पार्ट है। कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट रहेगा, टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट होगा। और कुछ लोग, एडवर्टीजमेंट आता है तो उसका स्वागत करते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए लॉ फैकल्टी को, हमें नहीं भूलना चाहिए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को। ये हर कॉलेज में तांडव, मौत का तांडव होगा, लोग हटेंगे। जो कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है, उसका खामियाजा हम सबको भुगत रहे हैं। हम लोग डाइसेंट देने के लिए भी तैयार नहीं है। अंदर में हेफा के ऊपर डाइसेंट देने के लिए तैयार नहीं है। वर्कलोड का रिडक्शन के ऊपर लोग डाइसेंट देने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ लोग एक खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे एक दौर में मैं सैल्यूट करता हूं अपने सारे एक्टिविस्ट को, अपने आवाज को बुलंद तरीके से रखने का उन्होंने जो कोशिश करते हैं हमेशा, उसके लिए एब्जॉर्प्शन तो तभी संभव होगा जब हम लड़ करके ये कमिटमेंट लेंगे। क्या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का कमिटमेंट है? क्या जब रेजोल्यूशन मूव किया जाता है कि कितने लोग उसमें साइन करते हैं? प्रमोशन को लेकर के सब रोजी पिक्चर प्रेजेंट किया जाता है, बहुत सारा जगह पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। एडॉक टीचर्स का बेसिक जो राइट्स है, वो राइट्स को इंप्लीमेंट कराने में हम लोग असमर्थ है। ऐसे समय में जब टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, यूजीसी, एमएचआरडी टाइमलाइन के तहत, ये टाइमलाइन की बात हमने शुरू से ही की है, हमने न्यूज़लेटर में भी लिखा था, ये टाइमलाइन के तहत ये सारी चीज इंप्लीमेंट होंगी और हो रही है। ऐसे समय में जिस आर्टिकुलेशन के साथ, जिस समझदारी के साथ हमारे लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एकेडमिक काउंसिल में अपनी बात रख रहे हैं, आज वाइस चांसलर को या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को मानना ही पड़ा कि ठीक है, आप हमारे खिलाफ हैं, हम डाइसेंट दे रहे हैं, वहां पर हम रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं, लेकिन उनको भी मानना पड़ा कि जिस प्रिपरेशन के साथ हमारे लोग जाते हैं, सीमा जी के लिए जो बात कही गई है, वो राजपाल जी के ऊपर भी वही बात आती है। वो बात हमारे सारे एकेडमिक काउंसिल के मेंबर, चाहे आलोक पांडे हो, चाहे कपिला हो, चाहे सुधांशु हो, चाहे सीएम नेगी साहब हो। सीएम नेगी साहब को मैं हमेशा बधाई देता हूं, जिस निर्भीकता के साथ इन्होंने अपनी बात वहां पर रखते हैं। जो डाटा उन्होंने आज लाइब्रेरी का बताया, अगर टीचर होकर के अपना लाइब्रेरी को अगर हम संभाल नहीं सकते हैं, लाइब्रेरी अगर आज आपका खत्म हो रहा है, लाइब्रेरी हमारा लंग्स है। अगर लंग्स ही खत्म हो जाएगा, क्या हम जिंदा रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और मैं कहूंगा कि रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन
हम अपनी बात पे चलेंगे। बहुत जल्द ये जो भ्रम लोगों का टूटेगा और टूटना भी चालू हो गया है। और हम इसका NEP का खिलाफत करेंगे, एब्जॉर्प्शन को रियलाइज करेंगे, फंड्स का जो कमी है उसके लिए हमारा लड़ाई हमेशा चलते रहनी चाहिए। ये हेफा सेफा बिजनेस, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका जो पॉइंट्स है, जो आपका जो करिकुलम है, उसको रिड्यूस कर दिया गया। वर्कलोड घटेगा नहीं, ये कॉमन सेंस की बात नहीं। हम किस चीज का पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं? खाली वर्कलोड ही नहीं घटेगा, बल्कि हमारा जो एकेडमिक रिगर है उसके साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उसके साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जब हम ये बात कहते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि हम ये बात उन्हीं लोगों के लिए कह रहे हैं कि जो एडहॉक साथी हैं उनको कैसे रेगुलर एब्जॉर्प्शन किया जाए। मैं बता देना चाहता हूं, वर्कलोड का घटने का खामियाजा परमानेंट टीचर को भी भुगतना होगा। और किसी के साथ कोई भी सरकार हो, वर्कलोड के बगैर या उनका जो नीतिगत फैसले हैं उसके तहत किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो अगर हमें जिंदा रहना है, सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। ये नहीं कि बाहर में एक बात और अंदर में एक बात, इससे किसी का भला नहीं हो पाएगा। इतिहास हमें कभी नहीं माफ करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य सर, आपका लीगेसी रहा है और हम बार बार बोलते रहे हैं। आप एक लीजेंडरी एक्टिविस्ट हैं, और एक एक्टिविस्ट ही नहीं, आप एक इंस्टीट्यूशन हैं जिनसे बहुत सारे लोग इंस्पिरेशंस लेते हैं। एक्टिविज्म की हो, चाहे हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई इश्यू हो, देश भर में आप लोग जाते हैं, शिक्षकों को जागरूक करते हैं, लामबंद करते हैं, और कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा हम शिक्षकों के लिए कुछ ना कुछ लेके आ सकें। Definitely, the instrumentalities of NEP like 100% online courses and SOL and CU says will further push the privatization and contractualization. हम इसका हर प्लेटफॉर्म पर विरोध करते आए हैं। Being the activist of AAD, सभी हमारे AC मेंबर और EC मेंबर या DUTA के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हों, सब लोगों ने हमेशा ही इस बात के पुरजोर विरोध किया है। NEP का हम शुरू से ही विरोध करते आए हैं। और मुझे आदित्य सर की एक बात याद है आज भी, जब 2015 में अब्जॉर्प्शन के इशू को इनिशिएट किया गया था, 2500 लोगों ने स्वतः ही स्पॉन्टेनियस अपना ग्रीवांसेस को टीचर एक्टिविस्ट तक पहुंचाया, और उन लोगों ने राष्ट्रपति जी को लिखा था कि उन्होंने बोला था कि इस हीट को, अब्जॉर्प्शन की हीट को आप हर प्लेटफॉर्म पे बड़े शिद्दत से महसूस करेंगे, और इसको लॉजिकली कंक्लूड करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। आज आप देख रहे हैं कि डूटा में भी इसको GBM से पास करवा गया। जो लोग हंसते थे पहले अब्जॉर्प्शन के इशू पे, आज वो इस इशू को आगे लेके धरना भी कर रहे हैं, या कितना कर रहे हैं, बनावटी कर रहे हैं, जो भी हमें नहीं पता, लेकिन हम और हमारे एक्टिविस्ट हमेशा ही इसको शिद्दत से महसूस करते हुए उसके लिए लड़ते हैं। मैं फिर से एक बार लिसनर को कहना चाहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन है तो हमारे स्पीकर सभी यहीं पे हैं और हम क्वेश्चंस का वेट कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन अपना देना चाहे तो चैट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके साथ ही अशोक जी, मैं कुछ बोलूं? जी सर। प्रोफेसर राजेश गिरी सर, प्रिंसिपल राजधानी कॉलेज, और हमारे रेस्पेक्टेड टीचर रहे हैं, इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा और सीख रहे हैं। बोलिए सर, प्लीज। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम आपको सर। अशोक, देखने वाली बात ये है कि हमारे जो AAD के चेयरपर्सन है आदित्य भाई, his mother just passed away few days back and he is with us. इससे बड़ा टीचर्स कॉज के लिए इतना समर्पित कोई नहीं हो सकता। तो आई सैल्यूट आवर फ्रेंड आदित्य भाई। उसके बाद मैं कुछ बात करनी चाहूँगा कि रियली आई एम थैंकफुल टू राजेश झा कि जो हमारा राजधानी कॉलेज का ग्रुप है
जब भी एजेंडा आता है ईसी का, एसी का, राजेश हो या आनंद प्रकाश हो, उस पर डाल देते हैं। इससे कनेक्ट क्रिएट होता है टीचर्स के लिए कि हाउ एडी इज कंसर्न विद द टीचर्स कोर्स, और शायद कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं करता है। सेकेंडली, अभी जो ये प्रोग्राम एसीईसी की मीटिंग हुई, तो जितने भी हमारे साथी हैं, मैडम सीमा जी हैं, आलोक भाई हैं, नेगी साहब हैं, अपने राजपाल जी हैं, हम स्टाफ रूम में बैठ के भी कीप ऑन टॉकिंग टू ईच एंड एवरी कोलीग व्हाट हैड हैपेंड इन द एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो सब सुनी सुनाई कहानियां हैं। तो जो आपने प्रोग्राम किया, वेयर वी हैव डायरेक्टली लिसनड आवर ऑनरेबल ईसी मेंबर्स, चाहे वो राजपाल जी हों या सीमा मैडम हों, एकेडमिक काउंसिल मेंबर जैसे हमारे नेगी साहब हों, आलोक जी हों, जो बाकी भी अदर मेंबर हों, तो ये एक मैसेज आता है टीचर्स में कि हाउ कंसर्न वी आर फॉर द टीचर्स कोर्स। सो थैंक्स टू यू अशोक फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, एंड आई थिंक दिस प्रैक्टिस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। मैं कुछ चीजें ना शेयर करनी चाहूंगा यहाँ। सबसे पहले नेगी साहब को तो स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि नेगी साहब के साउथ कैंपस से पहले तो ज्यादा लगाव नहीं था, अब लगाव बढ़ गया है। मेरे जो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहीं से ही आ रहे हैं, बट आई एम कंफर्टेबल कि डॉक्टर नेगी इज देयर, सो मुझे कोई प्रॉब्लम। थैंक यू नेगी साहब कि यू आर देयर टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट ऑफ राजधानी कॉलेज। अब मैं कुछ ना कुछ चीजें जो हम सभी डिस्कस किया कुछ बताने चाहूंगा आप। नंबर एक, जो नेगी साहब बात कर रहे थे लाइब्रेरी फंड की, मैं बताना चाहूंगा यहाँ ना गवर्नमेंट का रोल नहीं है। कॉलेजेस में फंड स्टूडेंट से आता है और वो निश्चित है हमारा हर एक कॉलेज का। वट एवर कंपोनेंट वी रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट्स, वो एक फिक्स कंपोनेंट है, नोबडी कैन टच दैट कंपोनेंट। अगर उस कंपोनेंट को हम खर्च नहीं करते उस फाइनेंशियल ईयर में, तो हमारा वो फिर यूजीसी के मेंटेनेंस में चला जाता है। कॉलेजेस में तो ये है, और मुझे लगता है कि शायद यूनिवर्सिटी में भी यही होगा, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर दो, अभी जो बात हो रही थी कि प्रमोशंस की, अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि पैनल आया प्रमोशन नहीं कराया है। मैं तो उससे भी अलग बात आपको बताना चाहूंगा, प्रमोशंस भी हो गए हैं, but I don't know why the governing body and principals, they are sitting on the notification. काफी कॉलेजेस में प्रमोशंस होने के बावजूद भी प्रमोशंस का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जो कि गलत है। और जो साथी प्रमोशंस के सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, जो एसओपी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इट सेज कि प्रमोशन वंस इट इज अप्रूव डन बाय द सिलेक्शन कमेटी, अप्रूव्ड बाय द जीबी, कोई रोल दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं है उसमें। इट इज डन बाय द गवर्निंग बॉडी। केवल पे फिक्सेशन को वो यूनिवर्सिटी के वहां जाता है। हमने एक प्रमोशन में लिखा सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वहां पे ऑब्जेक्शन आ गया कि नो, जीबी इज कॉम्पिटेंट। इन ए वे इट इज a very good thing that at the college level, whatever selection committee has done and GB has approved it, that matter is over. केवल वो फिक्सेशन के लिए जाता है. And I am happy to share with all of you कि राजधानी कॉलेज में हमारे कई कोलीग्स हैं. Our dear Rajesh is also there. जहाँ हमने एसोसिएट की सैलरी नहीं दी है, हमने डायरेक्ट प्रोफेसर की सैलरी दी है. कॉमर्स में हमने ऐसे किया है. पता नहीं बाकी प्रिंसिपल्स क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता. रादर वो प्रमोशन को नोटिफाई भी नहीं कर रहे हैं. दिस इज वन थिंग. सेकंड थिंग, मैं एक अपना इशू आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब एडहॉक टीचर्स डिफरेंट कॉलेजेस में लगे, उस टाइम ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन नहीं था. नाउ इट हैज कम टू, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ईडब्ल्यूएस. अब वो एज पर रोस्टर तो नहीं है. वो हाउ टू डील विद दिस थिंग. अगर कल को एब्जॉर्प्शन होता है एंड हाउ वी आर गोइंग टू एकोमोडेट ईडब्ल्यूएस, वो नहीं हो सकता. एंड आई शेयर विद यू that in a meeting, Vice Chancellor categorically says, do whatever you like, but don't deviate from the जो आपका रोस्टर है. तो this is one of the problem. So मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि प्रॉब्लम्स जो जैसे प्रमोशन की बात कई कॉलेजेस में हो रही है,
मेरे बाकी साथी भी जानते हैं कि राजधानी कॉलेज में सारे प्रमोशंस अप टू प्रोफेसर हम सेकंड राउंड तक कर चुके हैं। हम तो सैलरी भी दे रहे हैं, प्लस हमने एरियर्स भी दे चुके हैं, और अप टू 31 मार्च Rajdhani will be the first college to release 100% areas. And I'm really thankful to Aditya, Rajesh Jha, and all Simaji, Rajpal ji, and all my colleagues. What I really dare to do all such things because I know who is sitting, who is helping, who is guiding, and who is with us. पता नहीं principals क्यों नहीं कर रहे हैं ये. One thing specifically I am sharing with you कि EWS का problem राजधानी में भी है, बाकी सब कॉलेजेस में भी है, सेकंड ट्रेंच हमारे यहाँ भी आ गया है, और EWS का अपॉइंटमेंट कहीं पे हुआ, बोलना है मुझे तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा. Ashok, big thanks to all of you and to update me sitting at home. This is good thing being online. Thank you so much. थैंक यू प्रोफेसर राजेश गिरी सर. डेफिनेटली आपका काम करने का जो तरीका है मैंने देखा राजधानी कॉलेज में, मैंने 6-7 साल पढ़ाया है. इस तरीके से आपने कमिटेड एक टीचर, हर स्टूडेंट यही फीडबैक देता था कि गिरी साहब एक कमिटेड टीचर जो है हमेशा आपको टाइम पे मिलेंगे, अप टू डेट मिलेंगे, सारी चीजें विद प्रॉपर नोट्स एंड ऑल दैट थिंग. इसके अलावा